we were doing the 9th chapter, that is measures of center tendency. Okay, and today is the lecture 2. Already I have discussed the different formulas related to this topic. Okay, so today I am discussing individual series. Okay, so individual series, as I told you earlier also, individual series when only x is given. Okay, so only x is given, that this is called individual series. Okay, in individual series we have a two method. One is a direct method and second one is shortcut method. Okay, so direct method, as I told you earlier also, whenever you are doing any kind of numerical, firstly do write the formula. जब भी बच्चे आप न्यूमेरिकल करते हैं, प्लीज डू राइट द फॉर्मूला. Now I have written the formula. That formula of direct method is mean is equal to sigma x upon n. So that is understood to me that what I need sigma means summation of x and number of item. Okay, so this is the numerical given to me. Okay, student 1 2 3 4 5. Okay, and marks are also given. So what I need, this is called x, marks are called x. So what I need the sigma x. वन बाय वन वी विल सी फ्रॉम द फॉर्मूला. हम एक एक करके फॉर्मूला में देखते जाएंगे. अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा x चाहिए. सो आई एम गोइंग टू ऐड ऑल द यूनिट्स. सारी जो आइटम है उन्हें ऐड कर लेंगे. सो आई गॉट सिग्मा x इज इक्वल टू 325. And how many number of item? Number of item 1 2 3 4 5. We are not adding all. Okay, हम इन सबको ऐड नहीं करेंगे. So number of item is 5. So can I put the value now? Mean is equal to sigma x. Sigma x is 325. Okay, and number of item is 5. Okay, so what we are getting, 65. Okay, so our answer is 65. It means mean is equal to 65. Okay, so is it clear? Next method is shortcut method. Again you are supposed to write the formula first. A plus sigma d upon n. इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, एक तो a चाहिए, d sigma d और n चाहिए. As I told you, a is a assumed mean. assumed का मतलब होता है कि आप कुछ भी assume कर सकते हैं. Okay, and d is equal to x minus a. Okay, let it see from here. Students are given. Okay, marks are given. Okay, marks आपको हो सकता है आपको सिंपल मार्क्स ही दिए हों. So you can write it by your own student. 1 2 3 4 5. Okay, so marks is x. Fine. So assumed, आप कोई भी चीज इसमें से एक यूनिट assume कर सकते हैं. Better to take a mid value. अगर मान लो यहाँ पर 4 होते, सपोज 20 30 35 एंड 40 वुड बी देयर, तो हम इनमें से 30 एज्यूम कर लेते. सो दैट इज टोटली योर चॉइस. आप जिस मर्जी को एज्यूम कर सकते हैं. ओके, आई हैव एज्यूम्ड 35. सो d इज इक्वल टू x माइनस a. सो x इज 20. सो 20 माइनस 35 इज माइनस 15. 30 minus 35 minus 5. So by this way I got the value of sigma d is equal to 0. Fine. So now I'm going to put the value. So what was the formula? A plus sigma d upon n. Okay, so a कितना है 35. Sigma d is equal to 0. Number of item is equal to 5. So I got the answer. This is 35. Okay, so these are the two method. One is direct method and the shortcut method. Now I'm going through the discrete series. Okay, अब हम दूसरी करेंगे discrete series. Okay, for making it more clear मैंने तीनों method एक साथ लिख दिए हैं. ठीक है, this is for the discrete series. Fine बेटा. तो this discrete series में we have a 3 formula: direct method, shortcut method, step deviation method. Okay, I'm repeating again. One is direct method, shortcut method and step deviation method. Firstly we will do only direct method. हम सिर्फ पहले direct method करेंगे. Okay, so this is already given to you. Okay, x is given to you. frequency discrete series मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसमें x और f दोनों दिया होता है आपको. So this is already given. Okay, so what we will do, we are
as I told you earlier, whenever you are doing any numerical, kindly write only write the formula sigma fx upon sigma f. Okay, now let it see over here how to calculate it. अब मुझे क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स चाहिए. एफ एक्स कैसे आएगा, x मल्टीप्लाई बाय एफ. सो 20, 48, 44, 40, 36, 28, 24 and 18. Okay, I hope it is clear to you. हमें एफ एक्स कैसे मिला, बाय मल्टीप्लाइंग इट. ओके, सो एफ एक्स, नाउ सिग्मा एफ एक्स. सो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 258 बाय एडिंग ऑल द यूनिट्स. सारी यूनिट्स को जब हमने ऐड किया तो वी गॉट 258. सो शैल आई राइट 258 ओवर हियर सिग्मा एफ एक्स. नाउ व्हाट आई नीड, सिग्मा एफ. ओके, सो सिग्मा एफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय एडिंग ऑल द एफ यूनिट. सो बाय एडिंग ऑल द एफ यूनिट आई गॉट 60. सो 258 बाय 60. सो आवर आंसर इज 4.30. फाइन, लेट अस सी नाउ द शॉर्टकट मेथड. ओके, शॉर्टकट मेथड, दिस वन इज योर शॉर्टकट मेथड. ओके, अगेन एक्स एंड एफ इज गिवन टू यू. अब क्या करना है, सबसे पहला काम, yes, that's you will write the formula a plus sigma f d upon sigma f. okay, so a assume. अब assume कहाँ से करेंगे बच्चे, x में से, not frequency. you are not supposed to assume from frequency, you are supposed to assume from x. ओके, सो x में से आप एज्यूम करेंगे. आप कोई भी कर सकते हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यू कैन चूज एनी वन नंबर. सो आई हैव ऑफ 5. सो a इज इक्वल टू 5, बट आई नीड a, I got it. What I need, sigma f d. f I'm already having d. Now d is equal to x minus a. Okay, so what I will do, x minus a, x minus a, x minus a. okay, is it clear? x में से हम a माइनस करते जाएंगे. so what we got 0, 1, 2, 3 and 4. but I don't need the summation of this. मुझे ये नहीं चाहिए, but मुझे क्या चाहिए, f and d चाहिए, sigma f d. okay, so sigma f d, f and d को मल्टीप्लाई कर देंगे. so -30, I hope it is clear. f and d I am multiplying both the units. -11, 0, 6, 8, 6 and your is, sorry, 9. okay, and this is 8. okay, so I'm going to add all this. so sigma fd I will get 42. so a is equal to 5, as I assumed 5. sigma fd is equal to 42. sigma f is equal to 60. so by that is your choice, -40 will come here. okay, so that is your choice. you can calculate it by taking LCM or इन दोनों को काट के whatever you will get, you can add it over here. so you will get the answer 4.30. so if you will see in the direct method and shortcut method, we got the same answer. let it see whether you will get the same answer in step division method. okay, so again मैंने एक ही सेम न्यूमेरिकल अलग तरीके से, तीनों तरीके से दिखाया है. नाउ सेम x एंड f इज गिवन, बट हियर नाउ आई नीड a प्लस सिग्मा f d डैश अपॉन सिग्मा f इंटू c. ओके, a हमें पता है, एज्यूम करना है. कहाँ से एज्यूम करना है, फ्रॉम x. ओके, d आई नो कि d कैसे हमें कैलकुलेट करना है, x माइनस a, बट d डैश आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट d. d डैश x माइनस a अपॉन c. and c, as I told you earlier, it's a common factor. okay, चलिए एक एक one by one let's do it again. 5. okay, so dx minus a, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर मान लो आपको दे दिया जाता है पेपर में that calculate this numerical with shortcut and step division method, so do not repeat this thing. so I can write it from here, -3, 1, 0, 1, 2, 3, 4. okay, so
this is going to be same, but I don't need D, I need D dash. So C is the common factor. Common factor, let it see from X. 2 3 4 5, what is the difference? कितना कितना डिफरेंस है? एक एक का डिफरेंस है ना. 2 and 3 has a difference of 1. 3 and 4 has a difference of 1. 1 1. So what is our common factor? This is 1. So D upon C. D upon C. So I will get the same unit. Okay, because we are dividing by 1, so again we got the same unit. Okay, so again I don't need D dash alone, I need F D dash. F D dash. So how to calculate it? F multiply by D dash. Okay, so minus 30 minus 32 minus 11 0 6 8 9 8. So sigma F D dash is again minus 42. Fine. So let it put the value. A is 5. Sigma F D dash is minus 42. Sigma F, this is 60. Already हम कर चुके हैं पहले भी. ठीक है. So no need to add it again. 60. Common factor is 1. So by calculating it, what we got? We got the answer is 4.30. So is it clear that in discrete series, doing the formula by direct method, shortcut method and step deviation method, you will get the answer 4.30, 4.30, 4.30. Okay, so you will get the same answer. Okay, so I hope this is clear to you. Thank you, students.